विश्व के सबसे प्रसिद्ध निवेशक, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड इज़ मिस्टर वॉरेन बफेट। उन्होंने कहा था कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग व्यापार की भाषा है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी थी एंड वो इसको बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप अकाउंटिंग समझते हैं और अगर आप फाइनेंशियल्स एक कंपनी के अच्छे से रीड करें तो आपको कंपनी का पूरा बिजनेस, उसकी स्थिति, उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सब समझ में आ सकता है। और इसलिए अकाउंटिंग जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फाइनेंस में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं। Hello everyone, welcome to iExamB. I am Prachi Agarwal, your finance faculty at iExamB with more than 15 years of experience in the finance field. और आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फाइनेंस फील्ड से, आपने सुशील रगड़े सर का भी वीडियो देखा होगा कि हम नाबार्ड का 2023 का नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और उसका एग्ज़ाम कमिंग मंथ्स में होने वाला है। तो इसलिए हमने भी प्रिपरेशन अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए। एंड अगर आप जनरल एंड फाइनेंस स्ट्रीम दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपके लिए ये बेहतर होगा कि आप फाइनेंस स्ट्रीम से इसको अप्लाई करें। रीज़न समझने के लिए आप सुशील सर की वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। तो वापस आते हैं कि हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ योर नाबार्ड फाइनेंस सिलेबस ऑल्सो। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, it is about being able to summarize all the transactions of a business in number form which are readable and comprehensible। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि वो उसकी भाषा है, व्यापार की भाषा है। तो आपको समझने के लिए कि क्या कम्युनिकेट करनी चाह रही है कंपनी अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंट से समझ में आ जाना चाहिए। तो किसी भी भाषा की तरह इसके भी रूल्स एंड concepts and guidelines होती हैं to make sense so that everybody is on the same page who is trying to understand it. In rules, grammatical rules अगर आप बोलें इस लैंग्वेज के, इनको कहा जाता है accounting concepts and conventions. These are the ground rules on the basis of which the financial accounts are made. So let's understand them a little in detail over here. On your screen आपको जो दिखाई दे रहा है ये है बैलेंस शीट ऑफ नाबार्ड। बैलेंस शीट है नाबार्ड की 2023 की, 22-23 की लेटेस्ट। On your left side you can see funds and liabilities of NABARD. On your right side you can see the property and assets of NABARD. एसेट्स होते हैं जो कंपनी या इंस्टीट्यूशन ओन करती है, उनको बिलोंग करता है। फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ वो होती हैं जो कंपनी ओ करती है किसी और को, वो किसी और से उन्होंने लिया हुआ है एंड वो जवाबदारी है उनकी, उनको वो पैसा वापस करने की। सो ये लाइबिलिटीज़ और प्रॉपर्टी और एसेट्स अगर आप देखेंगे दोनों बैलेंस होते हैं, इसीलिए इसको बैलेंस शीट कहा जाता है। अगर आप दोनों ईयर्स का देखेंगे तो दोनों तरफ ये बैलेंस्ड है, अलग अलग तरीके। नाउ यू मे आस्क, ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है मैम, वी आर फाइनेंस स्टूडेंट्स, हमने फाइनेंस की कोई ना कोई स्टडी करी, हम तो सीए भी हैं, हमने एमबीए किया हुआ है, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, वेरी वेरी बेसिक, वी नो दिस, राइट? आई अग्री, बट अगेन जस्ट टू समराइज हाउ दीज आर हेल्पिंग यू, वाई वी हैव 2 years। सो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स ऑफ फ्यू। अकाउंटिंग पीरियड, नाउ व्हाई वी हैव डिवाइडेड दिस इज द कंपनी इज़ अ गोइंग कंसर्न, उसकी लाइफ लॉन्ग है। वी हैव, जब हम कंपनी बनाते हैं हम उसकी एग्जिस्टेंस डिफाइन नहीं करते हैं, वी अज्यूम कि वो
कंटिन्यू करती रहेगी बिजनेस, तभी वो हमको एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। अगर हम ये नहीं अज्यूम करेंगे तो कोई भी एक एसेट क्रिएट नहीं करेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी दूसरे शहर में रहने गए हैं और अगर आपको ये पता है कि आप वहाँ पे सिर्फ 6 महीने के लिए गए हैं, तो आप वहाँ पे एसेट क्रिएट नहीं करोगे, मोस्ट लाइकली नहीं करोगे, आप वहाँ पे घर नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मुझे वहाँ से वापस आना है। बट if you think you can stay there for your life, you may think about creating assets. Similarly, when businesses start, they always start with the thought that they will be a going concern, they will always exist. That helps them to create assets. But to be able to analyze, to be able to see how well we are doing, we need to divide that performance over certain time periods, and that is what is the accounting period. So whenever you look at the balance sheet, you will find कि आपके 2 साल का एटलीस्ट दिया जाता है financials to be able to compare how you have moved from one year to the other. So this is what is done here also. The another one of the important concepts is the dual aspect. What this means is every transaction that is recorded will have both aspects of plus or minus, and they will negate each other in terms of the value. Why this is there? And this is the reason a balance sheet is always balanced, because every transaction will have 2 aspects. Say for example, if a company buys an asset, right? If it is buying an asset, its asset values will increase, and if it is purchased with cash, the cash will decrease. So one is increasing, the other is decreasing. Another way could be that they have bought this asset by taking a loan, which means your asset will increase, and to be in balance, on the other side, maybe your borrowings will increase, right? So there will always a transaction will have dual aspect, which if of the same side will negate each other, or if different sides, then they will increase or decrease in the same proportion. Another concept I am discussing here is business entity. This is the basic principle जिसकी वजह से आपका जो कैपिटल होती है बिजनेस में, वो लायबिलिटी साइड पे लिखी जाती है. ओके, why? Because capital, although permanent in nature, does not need to be repaid. However, it does not belong to the company in principle. What that means is कि owners of the company are different from the company itself. NABARD के जो owner है, which is the government of India, it is different from NABARD. So although the government holds full stake and is not going to withdraw this capital, still the capital belongs to the government, which they have given to NABARD, but NABARD as an entity is answerable to the government for this capital. So this business entity means the business is always different in legal aspects from the owner of the business or the capital provider of the business. Another thought is prudence. Prudence or conservatism means that we will always provide and make provision for any probable losses, but we will not account for probable profits. ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में भी फॉलो किया जाता है, हम लाइफ में भी करते हैं कि अगर हमें सेविंग करना है, हम कलामिटीज़ के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, फ्यूचर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए सेव करते हैं. बट अगर हमें कोई प्रॉबेबल प्रॉफिट हो सकता है तो हम उसको अपनी इनकम में जोड़ के नहीं बैठते. क्यों? बिकॉज अगर वो नहीं कल्मिनेट हुआ, अगर वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मेरा ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि मैंने खर्चे ज़्यादा कर लिए होंगे. बट अगर मेरे को ये खर्चा करना पड़ा या नुकसान हुआ तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ. सो ये जो हम लाइफ में भी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, इसको हमने अकाउंट्स में भी लिया हुआ है ताकि कंपनी को अनएक्सपेक्टेड या झटका ना लगे एकदम से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें बहुत लॉस हो सकता है. सो कंपनीज प्रोवाइड
for that, and that's why it's known as provisions. तो ये provisions हमारी liability side में आता है, क्योंकि एक ये probable losses हो सकते हैं. So few concepts I have told you, these are not all the concepts, there are more concepts, but ये डिफाइनिंग रूल्स हैं. इन रूल्स में अगर आपको कन्फ्यूजन होगी तो आपको कई आइटम्स समझने में दिक्कत हो सकती है. वी लुक एट सम क्वेश्चंस ऑफ द पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ नाबार्ड ऑल्सो टू सी हाउ दीज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड or have to be understood to be able to answer the questions correctly. So stay tuned till the end to be able to see all those past year questions. So summary में अगर मैं बोलूँ, सबसे ज़्यादा important चीज़ हमें क्या समझनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, हमें डिफरेंस समझ में आना चाहिए एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस में, एंड आई विल ऐड वन मोर थिंग, कैपिटल में. राइट, कैपिटल ट्रीट लाइबिलिटीज़ की तरह होती है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लाइबिलिटीज़ की तरह होती है, इसलिए मैंने 4 प्रकार ही बताए. सो बिकॉज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होती है, बट फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम अ टर्मिनोलॉजी, यू शुड नो कैपिटल इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम other liabilities which the company has. So assets, I told you, is something which the company owns. Liability is something that you owe to somebody else. Revenue and expenses, these are the incomes and expenses that relate to a particular year. So the difference between these and these are, this is of capital nature, these are of revenue nature. Revenue nature means something which is recurring on an every year basis. This is something which is non-recurring. It is incurred once or twice, but they have their benefits or costs associated with a multiple number of years. So understanding the difference between capital expenses, revenue expenses, or capital incomes and revenue incomes is very, very important conceptual concept that you should be aware. Many CAs, many MBAs, finance students I have seen getting confused and therefore making simple conceptual errors in their exams because of this. So we have to pay attention to such concepts. Here I am discussing the accounting rules. Like I told you, there are certain rules, concepts, conventions on basis of which the entire accounting is built. So the first step in accounting any transaction is, once you know the rules, now you need to start recording those transactions as either a debit or a credit, right? So the increase and decrease are the pillars used to define them is known as the debit or the credit. The debit or the credit. However, it will function differently depending on what is the type or nature of the transaction and the account we are dealing with. Now this is the modern rule of debit and credit. There is a traditional rule. आपने अगर CA डिटेल जब आपने स्टार्ट करी होगी या BCom से अगर आपने स्टार्ट किया है तो अकाउंटिंग यूजुअली हम ट्रेडिशनल रूल से पढ़ते हैं. ट्रेडिशनल रूल which includes the 3 golden rules of accounting, which is also fine, and in case not, तो ये modern technique है जो काफ़ी लोग आज की डेट में यूज़ करते हैं डेबिट या क्रेडिट करने के लिए. So if it is an asset and if there is an increase in the asset, that means if you are buying an asset, you will debit that account, and in case there is a decrease, you credit. Expense also works in the same manner. If there is an expense that the company has done, it will be debited, and if there is an expense which has decreased, then it is a credit. It is a, it is an indirect way of income. Decrease in expense is an indirect way of income that is coming. That's why we credited. The rules on the liability, capital and revenue work on the opposite direction. Any increase in the liability, capital or revenue is actually an increase, that is credit, where income is coming in. And any decrease in any of these is an indirect way of expenses that is happening, therefore we debit those aspects. Now you will ask me, ma'am, why should I know these rules? In NABARD, as if I join as a finance officer, I will not have to make journal entries.
correct, you may not have to make journal entries, but as I keep saying, the importance lies in understanding these concepts, because otherwise there's a probability that you don't understand the financials in the correct manner. And here is a list of some very confusing accounting topics that I see majority of the people getting confused in. These are some of the topics, the top ones, like the difference between accrual and cash accounting. They can give you different profit results depending on which system is being followed. Many people get confused between what is depreciation and how is it different from amortization. What is gross profit and net profit? What is the difference between gross profit and the gross profit margin? Then the accounting standards as per GAAPs and as per IFRS. What is the difference between GAAP and IFRS? One is international, one is US based. How are they different from each other and how do they differently impact the financials? What is the difference between the fair value and the historical cost of an asset or a then there is the allowances for doubtful accounts versus bad debt expense. Very confusing aspect. Lot of students I have seen, even in practical life, people getting confused how to account for, how to make allowance and how to actually write off bad debt expenses. The difference between goodwill and intangible assets. I have also seen many people getting confused between intangible assets and fictitious assets. Then this one I already told you, capital expenditures versus revenue expenditures, because this can very differently impact the financials or the performance of the company. If you start treating a capital expenditure as a revenue expenditure, it can overly record your profits for that particular year and inflate your profits for the coming year. So it's very important to understand this difference. The difference between fair value and carrying value, fixed assets versus current assets, accumulated depreciation versus the depreciation expense that goes in the P&L. One is a part of your balance sheet, the other is a part of your P&L. But why? That is to be understood very well. Contingent liabilities versus contingent assets. Some students even ask me, does there exist something like contingent assets at all? Is it even possible? Then something like deferred revenue versus unbilled revenue or accrued revenue. Then there are people who also get confused between deferred tax asset or liability. Okay, deferred taxes, as I was mentioning here, and current assets. What is the difference between a provision a company has and a reserve it creates? What is capital stock and what is retained earnings? Lease, taking a asset on lease, say an operating lease or financial lease, as against taking a loan. What is the useful life of an asset versus the economic life? Useful asset life of an asset is very important point to understand for the depreciation purpose. And then accounting policy versus the accounting estimate. These are some of the most confusing. I'm not saying these are the only ones, but the clarity is very important and required to be able to proceed with confidence in your financial accounting related career. And this is what we aim at iExamB. We help you to unfold your potential, to understand and perform and take advantage of your education to the best possible way with the help of our very expert and experienced faculty who have worked in various organizations. उनके पास years and years का practical experience hai, in addition to the great degrees and the theoretical knowledge that they have. They are also carrying a lot of practical experiences, and that's why आपके जो ये confusing points होते हैं उनको वो catch भी कर पाते हैं, आपको upfront address भी कर पाते हैं. Specifically, if I tell you for the finance, because we have faculties both to cover for your phase 1 and for your phase 2. Phase 2 में आपका finance का paper आता है, which there are 3 dedicated faculties. Myself, Prachi Agarwal, I'm an MBA in finance. Prateek sir, he is a qualified chartered accountant, and Neha ma'am, who's also an MBA in finance. So let's move ahead. Why are we understanding all these? As I said,
Accounting helps you to record all the transaction and उसका main aim होता है to be able to make the financial statements. Now the financial statements are very very important. What do they include? These financial statements include your profit and loss statement, they include your balance sheet, they include your cash flow statement, and apart from that the notes to the accounts are very very important because they tell the kind of policies, conventions that have accounting policies that have been taken into account while making these financial statements. And there is also a statement in changes of equity. As I told you, although it's reflected in the balance sheet, sometimes a separate statement is also made to reflect the changes in the equity. If applicable, this is not 100% applicable in all kinds of companies. The most important ones are your this profit and loss statement, your balance sheet, and your cash flow statement. Now, you may be getting confused, why are we going into so much detail again and again? This is the glimpse of the financial accounting syllabus. This is not the complete syllabus for NABARD Finance. It is one of the part which carries a good enough weightage, and there are a lot of questions from this aspect that are asked in the last 2 years also. So financial accounting consists of 8 subtopics. First is the meaning, the basic accounting principle, concepts and conventions, which I discussed in brief in this particular video starting. Then preparation of financial statements, what are the nature of financial statements, what is the capital and revenue expenditure, profit and loss, trading account, profit and loss appropriation account. Now profit and loss appropriation account is different from profit and loss account. They are not the same. Profit and loss appropriation account is a continuation of the profit and loss account, which tells you after the company's profits are achieved, then how are they distributed and expended by the company, either in the form of dividends or they are retained back in the form of reserves in the company for further growth. So appropriation is how you are utilizing that year's profit. So it is different. Again, there was a conceptual question between these two in 2020, 3 years back. Then the analysis, the financial statements, as Warren Buffett had said, that if you are able to read the financial statements of the company, you can understand its business model, its future prospects, its current financial status, and see where it is going wrong or right. So understanding and analysis of financial statements is very very important, and the tools that are used, the most widely used tools are the ratio analysis. And exam point of view से इसका अच्छा खासा weightage होता है exam में. हर साल out of 50 objective questions, easily आपके 7 to 10 marks related questions come on this topic alone. So अच्छा खासा इनका weightage होता है. There are a lot of accounting standards that are used. सबसे ज़्यादा important आपके होते हैं 2 accounting standards, one relating to depreciation, the other relating to inventory valuation. Certain developments that have been happening in accounting overall. Then your sources and application of funds. This is very very important, and some of it is also a part of your financial statements, like your cash flow statement. Cash flow statement is the third most important financial statements in your overall financial statements topic. Apart from this, there is a fund flow statement which is different from the cash flow statement. Cash flow statement आपको overall cash position आपकी company की बताती है. Funds flow statement आपके working capital funds कैसे manage हुए हैं, how they are helping you fund your operations, वो बताती है. So there is a difference between these two. And then लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपका जो 8th टॉपिक है वो है आपके प्रेपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बासल 3 नॉर्म्स, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स, NPAs, and provisions thereof for banks and financial institutions. This is an additional topic that is done for NABARD. Why? Because NABARD is a financial institution, and if you've studied in detail and अगर आपने इस पे भी ध्यान दिया है जो मैंने आपको
नाबार्ड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी थोड़ी देर पहले, आपने नोटिस किया होगा दिस हैज़ आइटम्स विच आर अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल बैलेंस शीट जो आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की या एक नॉन फाइनेंस कंपनी की देखते हैं. द डिफरेंस इज़ बिकॉज द बिजनेस मॉडल ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर non-financial institution. So because NABARD is a financial institution, आपको एक बैंक की, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बैलेंस शीट और फाइनेंशियल अकाउंट्स कैसे होते हैं वो भी समझना ज़रूरी है. सो दैट इज़ कवर्ड हियर. Of course, at IXAMB we cover all these things in detail. Now let's come to something that you are more interested in from an exam point of view. The previous year questions related to this topic and how they have been asked. And you will be surprised to know that this particular topic, which is very, very basic in nature and looks simple, has been asked in both 2021 and 22 जब से descriptive पैटर्न ऑफ एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ है, बोथ इन डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव में 2021 की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंटिंग. As simple and basic question as this, and I have seen students make mistakes even in this simple direct question, because many times we underestimate the importance of strengthening our concepts and revising what we know. This is very, very important. So ये एक simple direct question आया था 21 में. अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था, वेयर दे हैड आस्क्ड डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम एंड एज पर विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. सो ये आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डायरेक्टली उन्होंने पूछा था. करेक्ट आंसर इज बी ओवर हियर. डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो इफ़ यू डू नॉट हैव क्लैरिटी, अगर आप भी कन्फ्यूज हैं उस एक टॉप confusing topic में, that is revenue expenditure versus capital expenditure, तो आपको इस question में confusion हुआ है. Okay, then if you don't know the concepts of accounting, आप कई students इसको prudence concept मानते हैं. A lot of students I have seen making this mistake again and again, year after year, thinking depreciation is a prudence concept. It is not a prudence concept, it is a matching concept. We divide the life of an asset over the useful life to charge depreciation so as to be able to match the expense with the revenue it is generating over that particular accounting period. It is very important to know this. Okay, in 2022, if I give you, out of the 6 descriptive questions, one question was related to financial accounting, where they had asked the spontaneous sources of funds and what are these sources from where they can be availed. This is an indirect way of referring to working capital sources. आपके स्पॉन्टेनियस होते हैं जिसके लिए बिजनेस को एफर्ट नहीं करना पड़ता है एक्सटर्नली या सेपरेटली. दे आर जनरेटेड आउट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी. सो वर्किंग कैपिटल के जो सोर्सेज होते हैं, बिगेस्ट बीइंग योर अकाउंट्स पेएबल्स. दिस इज़ व्हाट हेल्प्स इन योर स्पॉन्टेनियस सोर्सेज ऑफ फंड. सो अगर ये कॉन्सेप्चुअली अगर आपको समझ में आता है स्पॉन्टेनियस सोर्सेज का क्या मतलब है, आप आई एम श्योर वंस दिस हैज़ क्लैरिफाइड आप आराम से आंसर लिख सकते हैं. लेकिन जब तक आपको ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा एंड देन पीपल पैनिक. लास्ट ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल्दो दे क्लियर्ड इट, they left this answer thinking that this is a difficult question out of syllabus. We have not done it. Later they realized this was such a simple question, they could have attempted it so easily. Another objective question in 2022 डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया था, लेकिन रेशियोज पे एक ब्लॉक क्वेश्चन था कंसिस्टिंग ऑफ 4 questions, 2 marks each. सो टोटल रेशियोज के ऊपर 8 marks का क्वेश्चन आया था, 4 questions into 2 marks each, and it was a simple फुल मार्क्स लाने वाला क्वेश्चंस थे. बट कुछ स्टूडेंट्स ने उसमें गलती की थी. क्यों? क्योंकि उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं. कई ने इसको प्रीपेड एक्सपेंसेस सोच के कैलकुलेशन करी एंड इसलिए उनके सारे रेशियो जो चारों क्वेश्चन थे वो गलत हो गए. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रीपेड एक्सपेंसेस सोचा तो उन्होंने उसको करंट एसेट्स में ऐड कर लिया. बट
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअली एक फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ अ डिफर्ड रेवेन्यू, ओके, या डिफर्ड एसेट्स की तरह उसको हम ट्रीट करते हैं, एंड देयरफॉर वी डू नॉट कंसिडर दिस एज अ करंट एसेट, ऑल्दो उसकी रिपोर्टिंग करंट एसेट्स की तरह होती है। उसको जब आप रिपोर्ट करते हो, शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट सेज कि आपको इसको अदर करंट एसेट्स के अंडर रिपोर्ट करना है, बट जब हम एनालिसिस करते हैं, ये एक्सपेंस हो चुका है जिसको कंपनी स्लोली राइट ऑफ कर रही है, उसका हमारे पास कोई बेनिफिट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फंड फॉर अस, इट्स नॉट अ स्पॉन्टेनियस सोर्स, तो हम इसको निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं रेशियो एनालिसिस में। सो ना हम उसको करंट एसेट्स में लेते हैं, ना हम उसको ओवरऑल टोटल एसेट्स में कंसिडर करते हैं जब हम रेशियो एनालिसिस कर रहे होते हैं, एंड जब हम अपनी नेटवर्थ भी निकाल रहे होते हैं तो वी रिड्यूस दैट बाय दिस अमाउंट। वाई? बिकॉज वी नो कि ये हमारा राइट ऑफ है, हमारी नेटवर्थ में से ये स्लोली ओवर द ईयर्स राइट ऑफ होगा। सो अगर ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं थी, एंड कई स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक करी है, उनके पूरे ये फ्री के 8 मार्क्स गलत हो गए। So this is why it is very important to pay attention and revise and strengthen your concepts and go with confidence in these particular exam. They also help you in your इंटरव्यू। आपके नाबार्ड ग्रेड ए 2023 फाइनेंस स्ट्रीम की प्रेपरेशन के लिए आई एग्जाम बीज कोर्सेज लाइव, अ कंप्लीट रोड मैप preparation guide with the schedule of the live classes is freely available for download. You can download it from the link of this video also, जिसमें पूरी strategy for all your phase 1 topics, your phase 2 topics and a detailed live class plan has been given to you. The live class plan has already started फ्रॉम द 18th ऑफ अगस्त। इंट्रो क्लास 16th को हुई थी, 18 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको रिकॉर्डिंग्स भी उसमें कोर्स में मिलती हैं। कॉन्सेप्चुअल practical discussions happen in the class in addition to these are helping you for your better understanding with the faculty. This is in addition to the short and crisp videos, the study material in the PDF downloadable form, and a lot of practice tests at the chapter level, at the section level, at the full length exam simulation mock test level are given to you to practice from. So you can take advantage of this course to prepare 50% faster. Now what is the benefit of all this? You may say you have all the content for the preparation, which is correct, everything you would have. However, we have curated it in a crisp and exam relevant manner so that you save upon your time, you prepare in a focused and targeted manner to be able to crack the exam with 50% faster methodology. This is the success rate at the past years. 2021 we had launched the NABARD finance stream, and we have had very successful results in both 2021 and 2002. A lot of success stories are also available for hearing on our YouTube channel, so you can always tune in and listen to those. So that's all for this particular video. Please don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for more videos related to your NABARD finance preparation and prepare 50% faster with iExamB. Any queries, you can always write to us at hello@iexamb.com or call us at 9205524028. So all the best and thank you for being with us.